Today we are going to start first chapter of economics. Name of the chapter is micro and macro economics. Before starting micro and macro, we want to know about the economy. The first 1.1, a simple economy. Think of any society. People in the society need many goods and services in their everyday life, including food, clothing, shelter, transport facilities like road and railway, postal service, and various other services like that of teacher and doctor. In fact, the list of goods and services that any individual needs so large that no individual in society, to begin with, has all the things she needs. Every individual has some amount of only a few of goods and services that she would like to use. इकोनॉमी में हम बहुत सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को काउंट करते हैं जो किसी न किसी अर्निंग पर्पज़ के लिए की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टेलर इज़ डूइंग स्टिचिंग फॉर अर्निंग, डॉक्टर इज़ डूइंग ट्रीटमेंट फॉर अर्निंग, अ लेबर इज़ डूइंग अ वर्क फॉर अर्निंग। द कॉम्बिनेशन ऑफ सच एक्टिविटीज़ मेक अ इकोनॉमी. No one have sufficient for all work. A family farm may own a plot of land and some grain. Farming implements may be a pair of blocks and also the labor services of the family. A weaver may have some yarn, some cotton and instrument required for weaving cloth. The teacher in the local school skill require. Each of the decision-making unit can produce some goods or services by using the resources that has and use a part of produce to obtain the many other goods and services which it needs. For example, the family farm can produce corn, use a part of the produce and consumption purpose, and procure clothing, housing and various services in exchange of the rest of the produce. अगर अपन किसी फार्मिंग फैमिली का एग्जांपल लें तो वो अपना टोटल पार्ट प्रोडक्शन का सरप्लस अमाउंट जो रहता है उससे बाकी की सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं. मीन्स फार्मर हैव अ सरप्लस अमाउंट ऑफ wheat or rice that it sold in the market and exchange with other items. The teacher can earn The teacher can earn some money by teaching students in school and use the money for obtaining the goods and services that she wants. कोई टीचर है स्कूल में, अगर वो पढ़ाते हैं तो बदले में उनको जो अर्निंग होती है उससे वो अपनी बाकी की ज़रूरतें पूरी करते हैं, दूसरे सामानों को एक्सचेंज कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ दैट मनी. Each individual can thus use her resources to fulfill her needs. It goes without saying that no individual has unlimited resources compared to her need. किसी के पास भी पर्याप्त रिसोर्स नहीं है अपनी सारी ज़रूरत पूरी करने के लिए, इसलिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट के रिसोर्स होते हैं उन्हीं को वो एक्सचेंज करते हैं. द अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट द फैमिली farm can produce is limited by the amount of resources has and here the amount of different goods. जो भी एक फार्म फैमिली के पास सरप्लस अमाउंट होता है उनकी फार्मिंग का, वो सारी चीज़ें वो बदलते हैं लेकिन वो भी उतना पर्याप्त नहीं होता. It can procure the exchange of corn also limited. As the result, the family is forced to make a choice between the different goods and services are available. It can have more of goods and services only by giving some amount of other goods and services. इसलिए जो सारे लोग काम करते हैं बदले में जो अर्निंग होती है उससे वो अपनी बाकी की ज़रूरतें पूरी करते हैं. इसमें एग्जांपल दिया है फार्मिंग का और अपन दूसरा एग्जांपल भी यूज़ कर सकते हैं. मीन्स यू कैन यूज़ द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर. In general, every individual in the society is engaged in the production of some goods and services. She wants a combination of many goods and services, not all of which are produced by her. कोई भी इंसान है काम करता है उसके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती जो उसको चाहिए होती हैं, इसलिए अपनी अर्निंग का अमाउंट वो यूज़ करके वो सारी चीज़ें यूटिलाइज करने की कोशिश करता है. नीडलेस टू से दैट there has by some capability between what people in society collectively wants. Wants are unlimited in the society. सोसाइटी में अगर हम देखेंगे तो wants बहुत सारी हैं लेकिन रिसोर्सेज हमारे पास कम हैं.
इसलिए मेन इकोनॉमी में वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं कि जिनके कम से कम इस्तेमाल से हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकें. If people in the society do not want as much corn as the farming unit are capable of producing collectively a part of resources, used by the production of some other goods and services which is in high demand. On other hand, if people of society want more corn compared to what the farming unit is produced collectively, इसलिए हम वो सारी चीज़ों को एक साथ कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी, और वो रिसोर्सेज को उस वे में इस्तेमाल करते हैं कि उसका अल्टरनेटिव यूजेस ज़्यादा हो जाएं, कम इस्तेमाल किए. फॉर बेस्ट एग्जांपल, वाटर इज़ अ रिसोर्सेज. So in this chapter we want to know about the economy. Again, economy is a combination of all economical activities which are doing for earning something. Combination of all three sectors, primary, secondary or tertiary. Producing of goods and services or exchange with other goods and services, both are the part of economy. Next part is central problem of economy. Central problem of economy mostly divided into three categories. There are three types of central problem of economy. First one, what to produce. Second one, how to produce. Third one, whom to produce. So in an economy we have to say that resources are limited and wants are unlimited, or sometimes we have to face the scarcity of resources. कभी कभी हम देखते हैं रिसोर्सेज की कमी आ जाती है, तो फिर रिसोर्सेज का कैसे इस्तेमाल किया जाए कि कम से कम इस्तेमाल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए. In this conditions, first we have to select what to produce. इस कंडीशन में ही हम सेलेक्ट करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है. ये इकोनॉमी की एक प्रॉब्लम होती है. सेकेंड, हाउ आर दीज गुड प्रोड्यूस. सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज हाउ द गुड्स आर प्रोड्यूस. Every society has to decide on how much of which of the resources is to use in production of each of the different goods and services, whether to use more labor or more machine. दूसरी कंडीशन बनती है क्या बनाना है, तो बनाने से लेके वो सारी कंडीशन, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इस डिपेंड कि व्हाट टाइप ऑफ और व्हाट लेवल ऑफ प्रोडक्शन यू वांट टू डू. तो उसमें हमको देखना पड़ता है कि ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है या ज़्यादा मशीन की ज़रूरत है, और करंट टाइम के हिसाब से कौन सी टेक्नोलॉजी हम अडॉप्ट करेंगे तो चीपेस्ट इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा. तो सेकेंड प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी इज हाउ टू प्रोड्यूस. थर्ड, whom to produce. Every company want to distribute their goods for all category of population. पॉपुलेशन की सारी कैटेगरी तक हर कंपनी अपना सामान पहुंचाना चाहती है. तो थर्ड प्रॉब्लम होती है whom to produce, किसके लिए सामान. Means the total amount of all pairs is not more than 100 rupees. Now next is opportunity cost. What do you mean by opportunity cost? The second name of opportunity cost is sacrificing cost or alternative cost or transferring cost or displacement cost. Opportunity cost, we are taken the example of primary sector. We are having a piece of land or we want to produce a particular type of farming in that land. We are having an option of crop, two or more options. We can select any one option. We can sacrifice two options. The amount of that two options is known as opportunity cost. In secondary sector, we are taken the example of a person. A person is appointed for a job. Means a person is giving an interview in a three places. In all three places, he is selected. But he want to do a job in any one place. So the sacrificing place is known as opportunity cost. The amount of that sacrificing place. In territory sector, same as the service. Bank is the best example. A person is selected for the interview of three banks. The person is joining any one bank. So the amount of other two banks is known as opportunity cost. Means sacrificing cost is known as opportunity cost.